the most valuable player. That's what MVP means. Now, growing up, I've always been a gamer and still am. So, when we were looking for a name for our company, we weren't really hung up on what it should be. We just wanted to start. So, my brother used to play a lot of CSGO, and he thought MVP had a ring to it. So, we decided and stuck to it. Now, in hindsight, it's become something we try to live up to every single day. And this is where it all started. Now, back then, starting a company wasn't so glamorous. Most of my family wasn't really happy about the fact that I left a good job in corporate in Dubai so that I can sell computers online. But our plan has always been that simple. In 2015, fresh off of building with friends, family, being that tech nerd of the house, also getting freshly disillusioned from the 9 to 5 corporate struggle, it struck me. What if I could do this for a living? 3 idiots के 5 viewing के बाद मैंने सोचा all is well और शुरू कर लो. And honestly, India's PC market leaves a lot to be desired. You shouldn't be spending hours researching every configuration, just trying to make sure it works altogether. Now that's our job. You shouldn't have to go to 5 different stores to get the parts you were looking for. It should be all at one place. And definitely you shouldn't be paying something that ends up breaking with absolutely no one to help you. And genuinely, both me and Shaz really cared about this thing. But naturally, everyone we knew thought we were crazy. अब ये था 2015. जियो अभी तक लॉन्च नहीं होता. But thanks to Amir Khan, one fine day, resign कर दिया. किसी दोस्त को पकड़ा, वो इंजीनियर, बोला चलो कंपनी स्टार्ट. And if I talk about how we started, तो पूरा एक एपिसोड बने. Me and Shaz reached the office, CEO को बोला बॉस कंपनी खोल रहा है, 15 दिन में डॉक्यूमेंट वगैरह सब डन, खुल गई कंपनी. Now the big question came, नाम क्या रखना है? बहुत फुद्दू ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था. At one point इसका नाम कीड़ा होने वाला था. कीड़ा. और कविन से डिस्कस किया, दोस्तों से डिस्कस किया, संबजी से MVP गेमिंग, बोले बढ़िया, let's do it. डोमेन सर्च किया, mvp.com not available, mvp.in not available. तो लो भाई the mvp.in मिल गया. अभी हम MVP गेमिंग नहीं, अब हम सिर्फ द MVP. बट उस टाइम पे काफी बूटस्ट्रैप सा सीन था. घर में मिला जुला के 5 लाख रुपए उधार लिए, वेबसाइट सोचा बना लेंगे. इंजीनियर से आखिरकार 1 महीना पूरा पुराना HTML याद किया, गूगल किया और काफी न्यू टाइप वेबसाइट बना ली. खुद ही बनाई, वेबसाइट होगी रेडी. कई मिलियन वेबसाइट्स के बीच में एक और वेबसाइट. अब ऑर्डर लाए तो कहाँ से? जीरो ट्रस्ट, न्यू एंटिटी. नोबडी वांट्स टू परचेज अ हाई कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेंसिव सिस्टम. सोने पे सुहागा, COD का जमाना था, कैश ऑन डिलीवरी. एक्चुअली यू नो हु. नाउ दिमाग में एक बत्ती थी, let's try and sell something cheaper. And we thought LED based. Now remember this, the first few months of our existence, RGB LED strip Amazon पे तई बिकती थी, जो PC में लगे. And we started off with that, listed a few PCs as well. Now LED strip बिक जाती थी, लेकिन PC कभी नहीं बिकता था. जितने लोगों ने LED strip खरीदा, उन सबको हम परेशान करते थे कि भाई रिव्यू कर दो. सॉरी, आपको काफी परेशान किया है LED रिव्यूअर्स. Now रिव्यूज बढ़ने लगे तो किसी ने सोचा PC भी ठीक से डिलीवर करेंगे, तो PC का ऑर्डर आ गया. Figured out the packing, भिजवा दिया गोवा को. First time we actually shipped to Goa. Now, Ascent back then, as it is today, 8 years later, is consulting. We were geeks through and through to know exactly what someone should buy, for what application at what specific budget, with a good upgrade. We genuinely cared enough to help people save money. दो A4 शीट भर के ईमेल लिखते थे. Really, घंटों तक फोनों पे बात करके समझाते थे, कन्विंस करते थे. एंड धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये सब अभी भी मेरे बेडरूम से हो रहा है. जस्ट 2 guys PCs. 4 से 5 ऑर्डर महीने में आ जाते थे. मैं शायद गाड़ी लेके चल पड़ते थे लोकल मार्केट, नेगोशिएट करके, बार्गेन करके सस्ते में सामान खरीद लेते थे. मेरा से जाके उठा भी लेते थे, गाड़ी लोड भी कर लेते थे. आके बिल्ड, टेस्ट, कस्टमर को अपडेट, पैकिंग, और फिर उठा के कुरियर वाले के पास भेज दिया. नाउ ऑफ कोर्स वी वर जस्ट 2 guys. ऑर्डर्स बढ़ने लगे, ऑर्डर्स के साथ सपोर्ट इश्यूज भी बढ़ने लगे. Now, we were the only ones, even back then, to offer on-site warranty. कि हम आपके घर तक आगे ठीक करके जाएंगे. इस चक्कर में काफी देश दर्शन, कभी शायद ज्यादा था, कभी मैं, बस ट्रेन जैसे तैसे पहुंच के हम लोग कर देते. फोन सपोर्ट हम लोग रात में 3-3 बजे भी आंसर कर देते. एक टाइम शायद की शादी के बीच में एक बंदे का फोन आया था 2017, एंड आई एक्चुअली वेंट अप टू द स्टेज एंड उससे फोन लेके मैंने फोन पे भी बात की. हाँ. Now even today, if you go through our reviews, actually a lot of them got lost between website version 1 and 2 before we moved to Google reviews. And I would like it if you do go through them and read. Now you will notice a recurring theme. It's like
customer delight. There's nothing like it. Those reviews really made our day. The trust that our first few customers had was unbelievable. And we started hiring. 10 systems became 100, 100 became 500, and here we are, over 10,000 systems shipped across India. And we spent all of the past 8 years trying to smooth out this entire rocky patch of building our computer. And we have realized a lot of things. A professional and knowledgeable team matters. Trying out what you're going to buy before actually buying it matters. Checking your system 48 hours plus to make sure you get it working out of the box also matters. The peace of mind you get with a 3 years doorstep warranty also matters. But what really matters above all else is being closer to you. Even after having Pan India coverage with our service engineers, we set out to build a store in every major city of India. Started in Hyderabad, added Delhi, Bangalore, and now Mumbai. So, what's next? Stay tuned to find out.